So unit 30, the transatlantic cable, right? So let's talk about this. Look at the words that we have today. The first word is cable. What is a cable? Cable is a very long rope, wire, that is called a cable. कैटेस्ट्रॉफिक, कैटेस्ट्रॉफिक यानी बहुत दुर्भाग्य वाला, जहां पे बहुत सारा दुर्घटना होती है, वो બધું नुकसान થયું હોય, that is catastrophic. Lot of disaster. Disastrous is catastrophic. Compensate, compensate यानी भरपाई करना, कोई नुकसान की भरपाई करना. कोई चीज कम है तो उसको कंप्लीट करने के लिए कुछ और ऐड करना, दैट इज कॉल्ड कॉम्पनसेट. जैसे हमें तीखा लगा है और घर में चॉकलेट नहीं है तो हम शक्कर खा लेते हैं क्योंकि चॉकलेट नहीं. तो चॉकलेट की कमी पूरी कैसे की? शक्कर से. तो शुगर कॉम्पनसेटेड फॉर चॉकलेट, दैट इज कॉम्पनसेट. कोई चीज की कमी पूरी करना, और या फिर कोई नुकसान की भरपाई करना, दैट इज कॉल्ड कॉम्पनसेट. Next is an interesting word, disparate, not desperate, disparate. Disparate यानी जो अलग है, दूसरी चीजों से अलग है, यूनिक है, डिफरेंट इन क्वालिटी और काइंड, that is called disparate. Next is flaw. Flaw यानी खामी, कोई चीज में जो खामी होती है, that is called flaw. Flawless यानी खामी बिना का, जिसमें कोई प्रकार की खामी नहीं है, that is called flawless. Next is indispensable. Indispensable का मीनिंग होता है जिस चीज जो आपके लिए बहुत जरूरी है, जिसको आप इधर उधर फेंक नहीं सकते, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज इंडिस्पेंसिबल. जैसे आज के जमाने में इंग्लिश लैंग्वेज करियर में इंडिस्पेंसिबल है. इंडिस्पेंसिबल यानी आप उसे डिस्पेंस यानी फेंक नहीं सकते हो, यू नो, आपको पकड़ के रखना है. इट्स इंडिस्पेंसिबल. Next word is inexplicably. Inexplicably means जो expected है उससे अलग. First let us understand explicable का meaning क्या है. So explicable यानी capable of being accounted for, that is explicate. यानी जो समझ में आता है उसको बोलते हैं जो चीज हम समझा सकते हैं, that is called explicated. उसमें से बनता है explicable, जो आप समझा सकते हो, लेकिन आप जब बोलते हो कि उसे समझा नहीं सकते हो तो वो बन जाता है inexplicable. यानी जो समझ में नहीं आता या unexplained है, that is inexplicable, यानी वो किसी के समझ में नहीं आता. Inquiry, inquiry यानी पूछताछ, right? Next is insulation. तो इंसुलेशन हम क्या करते हैं जब हम कोई चीज को इंसुलेट करते हैं, दैट इज कॉल्ड इंसुलेशन. यानी गर्मी में मटेरियल, insulating material that reduces or prevents the transmission of heat or sound or electricity. जब हम कोई चीज को प्रोटेक्ट करते हैं कोई चीज से, तो उसमें गर्मी नहीं आए या ठंडी नहीं आए, तो वो चीज को हम इंसुलेट करते हैं. जैसे सीलिंग को इंसुलेट किया है, राइट, दैट इज इंसुलेशन. परसिवरेंस यानी मेहनत, जब हम बहुत मेहनत करते हैं, दैट इज कॉल्ड परसिवरेंस. रैली, रैली यानी जब बहुत सारे लोग एक साथ निकलते हैं या फिर कोई कॉज, कोई पर्पस के लिए, कोई टॉपिक है उसके ऊपर आप बाहर निकलते हो लोगों के सामने, उसके बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए, तो उसको बोलते हैं रैली. अदर वर्ड इज लाइक आंदोलन कर, यू नो, आंदोलन करते हैं तो रैली निकालते हैं. नेक्स्ट इज रिक्विजिट. रिक्विजिट यानी जो जरूरी है, रिक्वायरमेंट की चीज है, इसको बोलते हैं इट इज अ रिक्विजिट. जैसे आपको सैंडविच बनानी है तो उसमें ब्रेड एक रिक्वायर्ड चीज है. ब्रेड क्या है, सैंडविच बनानी है तो ब्रेड चाहिए आपको, तो ब्रेड इज द रिक्विजिट. व्हाट इज इट? इट इज अ रिक्विजिट, इट इज अ रिक्वायर्ड थिंग. सेट आउट यानी कोई सफर पे निकलना, कोई चीज करने के लिए निकलना, उसको बोलते हैं सेट आउट. नेक्स्ट इज स्नैप. स्नैप सिंपल मीनिंग फोटो खींचना, दैट इज स्नैप. स्नैप का दूसरा मीनिंग होता है जब कोई चीज टूट जाती है, जैसे कोई आपके पास में लकड़ी है या ऐसे टूट गई तो उसमें से जो ऐसे कट करके आवाज आती है, दैट इज कॉल्ड स्नैप. कई बार लोग कुछ वजन उठाते हैं और उनकी हड्डी टूट जाती है तो बोलते हैं उसकी बॉडी में कुछ टूटने की आवाज आई, समथिंग स्नैप्ड इन हिज बॉडी. थर्ड मीनिंग ऑफ स्नैप इज किसी के ऊपर गुस्सा हो जाना, भड़क जाना,
झगड़ा करना किसी से, दैट इज कॉल्ड स्नैप. मेरा दोस्त आज मूड में नहीं था तो वो साला भड़क गया मुझ पे. ही स्नैप्ड एट. व्हाट डू यू से? ही स्नैप्ड. नेक्स्ट इज टो. टो मीन्स जब कोई चीज को, गाड़ी को हम खींच के ले जाते हैं तो उसको बोलते हैं टो. जैसे टोइंग वैन होता है, राइट. ट्रांसमिट यानी कोई सिग्नल फेंकना, हवा में डालना, उसको बोलते हैं ट्रांसमिट. सिग्नल ट्रांसमिट करना, जैसे आपका फोन है तो वो सिग्नल भेजता है या लेता है, इट इज ट्रांसमिटिंग सिग्नल. और जो टावर होता है वो टावर को ट्रांसमीटर बोलते हैं. क्या बोलते हैं? ट्रांसमीटर. ट्रायम्फ यानी जीत. जब कोई चीज की जीत होती है किसी को हरा के, तो वो जीत को बोलते हैं ट्रायम्फ. अटरली. अटल यानी पूरा पूरा, बिल्कुल, यानी कुछ रहा ही नहीं, कंप्लीटली, दैट इज कॉल्ड अटरली. पूरे पूरे बोलते हैं ना, अटरली बटरली डिलीशियस, यानी पूरे पूरा मक्खन वाला, दैट इज अटरली. विलिफाइड. विलिफाइड यानी जो बदनाम है, स्प्रेडिंग नेगेटिव इंफॉर्मेशन, दैट इज विलिफाइड. किसी को बदनाम करना या बदनाम हुआ, दैट इज कॉल्ड विलिफाइड. एंड लास्ट इज वोल्टेज. वोल्टेज इज रिलेटेड टू इलेक्ट्रिसिटी. किसी की वोल्टेज, so that is electric force that produces a flow of electricity in a circuit expressed in volts, so that is voltage. Since we have done all the meanings, let's match them with the right definition. दिखाई से बताना है स्क्रीन? Yes, sir. Great. So let's start with the first one. Give me the meaning for cable. So I'll say cable matter. Yes. As wire used for sending electric signals. What is catastrophe? Extremely bad, बहुत बुरा, दुर्घटना. Compensate. Yes, to make up for, to balance out. Disparate. Disparate. Different. Yes. Flaw. B. Yes. A mistake or weakness, especially in a design. कोई चीज में जो खामी है, गलती है, तो उसको बोलते हैं ये एक काम में खामी है, that is a flaw. Indispensable. P. P. Completely necessary, बहुत ही जरूरी. Inexplicable. जो हम समझा नहीं सकते. Without explanation, that is called inexplicable. Next one. Inquiry. An official investigation. Insulation. Material used to prevent passage of electricity, heat or sound. दीवार को या दरवाजे को इंसुलेट करते हैं. इंसुलेट करते हैं यानी यहाँ पे कोई बिजली नहीं आएगी, गर्मी नहीं लगेगी, आवाज नहीं आएगा, that is insulated. Next one. Perseverance. C. C, correct. Continuation with a task despite difficulty. मेहनत करना. That is called perseverance. Rally. H. To gather support. Very good. Next one. Requisite. A need or a requirement. Next one. Set out. L. Start an activity. चालू करना, कोई activity चालू करना. Next one. Snap. Snap यानी to break suddenly, अचानक से टूट जाना, that is snap. Toe. Toe यानी किसी को पीछे से खींचना, that is O. To pull behind. Triumph. K. Triumph is G. To succeed or win. कोई चीज जीतना is triumph. Transmit क्या है? K. To send is transmit. Utterly. Anyone? M. Yes, utterly is M. Totally. Totally delicious. Utterly butterly
delicious, right? પૂરેપૂરું એમ એટલે એને કહેવાય utterly. Vilified, બદનામ કિયા. Are having one's reputation ruined, being spoken about in a bad way, बुरी तरह से बोला गया हो, that is vilified. And last one, voltage. What voltage is? Measure of electric power. All right, so let's begin the lesson. Clear થયા ને બધા words? Aisha, Shifa, who is there? Yes, sir. Read the first para. Yes, sir. Laying the translectic cable was the culmination of unplugging preservation of one man leading like minded men of disparate technical and scientific advance and the need for faster communication. The first attempts at laying the cable in the 1850s, each of the which cost an enormous amount of money, failed utterly, yet as technology and science improved and need for fastest communication increased, preservations finally paid off. Can I read? Yes. The man who relied support and raised money for the translectic cable venture was Creosfield, a New York businessman who started the New York, Newfoundland and London Telegraph Company in 1854. For the next 20 years, failed raise money and expectation in North America and England for repeated attempts at laying a cable, despite catastrophic cable breaks and a formal inquiry when the first cable supported working within days. Laying the transatlantic cable was the culmination. Culmination यानी the completion. जब कोई चीज सारी की सारी खत्म होती है of the unflagging perseverance of one man. एक आदमी का मेहनत का नतीजा था. Leading like-minded men, उसके जैसे दूसरे लोग भी उसमें join हुए of disparate technical and scientific advances, जो अलग-अलग unique technical और scientific quality वाले लोग थे, and of the need for faster communication, right? तो ये जो केबल लगा है, the first attempts at laying the cable in the 1850s में जब लगाने की try की, each of which cost an enormous amount of money, जो पहली बार जब उन्होंने ये प्रयास किया, failed utterly. Yet as technology and science improved, जैसे जैसे हमारे science को improve किया गया, the need for faster communication increased, perseverance finally paid off. उनकी मेहनत ultimately रंग लाई. क्या मेहनत थी हम देखेंगे. The man who rallied support, उसने लोगों के पास से support लिया, इकट्ठा किया, and raised money for the transatlantic cable venture was Cyrus Field, a New York businessman. और उसने क्या किया? Who started the New York, Newfoundland and London Telegraph Company in 1854. तीन जगह पे, New York is in US, Newfoundland कनाडा में है और लंदन है इंग्लैंड में. तो ये उसने कंपनी स्टार्ट की, यानी ये तीन जगह को कनेक्ट करना चाहता. For the next 12 years, Field raised money and expectations in North America and England. England और दोनों के बीच में उसने पैसा लिया लोगों से and expectations बनाए for repeated attempts at laying a cable, despite a catastrophic cable breaks and a formal inquiry when the first cable stopped working within days. तो यानी ये दोनों कंट्रीज के बीच में केबल बनाने का उन्होंने प्लान बनाया. The scientific and technological advances began with electricity. जैसे बिजली आई वैसे ये start हुआ. The study of which was attracting the greatest minds of the age. ये जो study थी वो उस जमाने के सारे greatest minds को attract कर रहा. Samuel Morse invented a code. उसने ऐसा code बनाया that made it possible to send information over electric wires. कि वो electric wires के through एक Morse code के through वो information भेज सके. And he made the first successful transmission in 1842. तब उसने ये मैसेज भेजा. अगले साल, the next year, Dalemedia, a Portuguese engineer, announced the use of gutta percha, a rubber-like sap from the gutta tree. एक नई चीज उसने दिखाई ट्री में से as an insulation for wires कि ये वायर के ऊपर लगाना है. Thus, two of the requisites, दो जो required चीज थी
for an underwater cable were met. नहीं लोगों हम सोचते कि यार इतनी बड़ी कंट्रीज कैसे कैसे कनेक्टेड है कंट्रीज पानी के बाद, तो हवा में तो वायर नहीं लगा सकते, तो पानी के अंदर से उन्होंने वायर लगाया, केबल. In the next several years, telegraph cables were laid in Atlantic Canada, across the English Channel, and Europe, around Europe, and across the United States. ये सारी countries एक दूसरे से connected हो गए. कैसे? पानी में से उन्होंने वायर डाला. तो वायर छोटा मोटा वायर नहीं रहा होगा, वो केबल बहुत बड़ा. In 1857, the copper company field कंपनी का नाम था फील्ड, उसी की कंपनी थी, फाउंडेड सेट आउट द फील्ड फाउंडेड सॉरी तो जो कंपनी थी, जो फील्ड नाम के इंसान ने जो उसने स्थापित की, वो कंपनी ने क्या चालू किया, सेट आउट टू ले द केबल, पानी में केबल डालना चालू किया. दैट हैड टेकन मंथ्स एंड ऑलमोस्ट $1 million टू मेक, यानी करोड़ों रुपए लगे थे उसको सिर्फ बनाने में. वो केबल को उन्होंने लगाना चालू किया. केबल वाज मेड ऑफ 340,000 miles of copper and iron wire and 3 tons of gutta percha insulation. Gutta percha वो जो पेड़ का जो पदार्थ था, वो उसके वो केबल के आजू बाजू में लगा दिया इंसुलेशन के फॉर्म, जिससे वो वायर को पानी से कोई फर्क ना पड़े. Too much for one ship to carry, लेकिन इतना ज्यादा था कि एक शिप कैरी ना कर सकता. केबल was divided between 2 ships, 2 शिप के बीच में उसको रखा. Each towed after another, एक को खींच खींच के अंदर डाला गया. All 4 provided by the British and American navies. और ये जो थे शिप्स, दो शिप्स को पकड़ने के लिए ऐसी 4 शिप्स ब्रिटिश और अमेरिकन नेवीज ने प्रोवाइड किया, क्योंकि इतना वजन पानी में ले जाना. After only 255 miles of cable had been laid, इतने माइल्स तक केबल लगाने के बाद, the cable stopped transmitting and then snapped. इतना लंबा केबल था क्योंकि समुद्र में था. तो 255 माइल्स यानी 500 किलोमीटर के बाद वो केबल रिस्पॉन्ड करना बंद हो गया एंड बीच में से टूट गया, सिंकिंग टू द डेप्थ्स ऑफ द ओशन, वो पानी में चला गया. The second attempt was made in 1858. Imagine कितना खर्चा वेस्ट किया पैसा, right? The second attempt was made in 1858, एक साल बाद, beginning at the midpoint of the Atlantic. वहां से बीच से स्टार्ट किया, from which each ship lay cable as she sailed to her home. So वहां से हर एक शिप को केबल डालना था. Again, the cable inexplicably stopped working. वहां भी कोई कारण के बिना ही, यानी हमें पता ही नहीं है क्यों, लेकिन वो काम करना बंद हो गया. They tried again a month later. वापस एक महीने बाद ट्राई किया, beginning again from the middle and sailing in opposite direction. This time success. ये बार उनको सफलता मिली. Queen Victoria sent a message to President Buchanan and both countries celebrated. यानी ये बुकानन यानी could be the president of Canada or US, और Queen Victoria obviously रही होगी British Queen. तो दोनों कंट्रीज ने एक दूसरे को मैसेज करके बात की and both countries celebrated. Within hours, however, the signal began failing. लेकिन वो सिग्नल बंद हो गया. To compensate for the fading transmission, वो जो fading transmission कम हो जाए उसकी भरपाई के लिए White House, the American engineer transmitted messages at higher voltages, eventually burning out the cable. तो उन्होंने वोल्टेज ज्यादा डाला, इससे केबल जल गया. Once a hero, field was now vilified. एक जमाने में बेचारे आदमी को फील्ड, कौन फील्ड था? This guy in the beginning, जिसके बारे में हमने देखा, साइरस फील्ड. तो एक जमाने में बेचारा बहुत फेमस हो गया था, वो अभी बदनाम हो गया क्योंकि उसके हर प्रयास फेल हो गए केबल वाले. Work on the transatlantic cable was halted because of the American Civil War. तो वहां पे अमेरिका में वॉर चालू हुआ, जिसकी वजह से ये काम अटका दिया गया. During the war और वॉर के दरमियान, the telegraph became indispensable. तो उस जमाने में कौन सी चीज की जरूरत थी? इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ. तो वॉर में टेलीग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट था, तो इसीलिए वो बन गया indispensable. An enthusiasm for a transatlantic cable mounted. और वापस, बिकॉज ये बहुत जरूरी था, तो वापस ये पूरा समुद्र के वायर वाला केबल के बारे में जो लोगों का जो इंटरेस्ट था वो वापस जाग गया. In Scotland, William Thomson, who would later be knighted Lord Kelvin for his work,
corrected the design flaws in White House's cable. स्कॉटलैंड वालों ने जो गलतियां थी उसको इम्प्रूव किया. Kelvin also designed a mirror galvanometer that could detect weak currents, जिससे पता चले कि कहां पे वो वायर में कमजोरी है, thus allowing lower voltages and weaker currents to transmit information. In 1866, the world's largest steamship laid Kelvin's new cable. वापस 1866 में वापस उन्होंने 8 साल बाद वापस केबल डाले, नए केबल डाले. An unqualified success. Field's perseverance had triumphed in the air. यानी सफलता तो मिल गई उनको, लेकिन इसके पीछे आइडिया किसकी थी? फील्ड की. यानी फील्ड की जो मेहनत थी, परसिवरेंस, had triumphed in the air. यानी उस बेचारे आदमी की जो मेहनत थी वो आखिरकार रंग लाई या जीत गई. Right? So here are the questions. Look at the following inventors in the list of descriptions below. Match each inventor with the correct description. So 1, 2, 3 and 4. तो कौन से वाले ने burnt out the first Atlantic cable using high voltages? किसने cables जलाए? ऐसा कोई था नहीं, वो अमेरिकन लोगों ने किया था, यानी इसमें से कोई नहीं है. पछी next, was the first to be utterly successful in the getting the transatlantic cable laid? No. Invented a type of insulation from the sap of a tree. कौन था ऐसा जिसने पेड़ के सैप में से एक लेप बनाया? Second one. Yes, D. Almeida. It is D. Almeida here, right? तो क्या किया था उसने? Here it is written. D. Almeida, engineer. क्या किया उसने? गट्टा पर्चा, rubber like sap from the gutta tree as an insulation for the wires का protection बनाया उसने. Next one, Dash sent a telegram message to President Buchanan. ऐसा कोई था नहीं, वो रानी थी. रानी हमारे ऑप्शन में नहीं है. Next one, who was the first to attempt to have a transatlantic cable laid? किसने पहली बार लगाया? Morse. मॉर्स ने लगाया? नो. फील्ड ने लगाया. It was Field. He was the first. Field ने लगाया ना. Kevin was there, right? Was the first to attempt. उसने क्या किया था? वो पहला इंसान था जिसने ये अटेम्प्ट किया था to have a transatlantic cable laid. Next one, developed a code for transmitting messages by electric cable. किसने किया था? ट्रांसकोड किसने बनाया था? Obviously it was Morse code. तो Morse code किसने बनाया? जिसका नाम था Morse, right? So one more, Kelvin ने क्या किया था? Kelvin दूसरा आदमी था, पता है यहाँ पे? Kelvin स्कॉटलैंड का. केल्विन ने वापस वो केबल को लगाया और तब उसको सफलता मिली. एनीवन? आंसर इज बी हियर. This one. He was the first to be utterly successful in getting the transatlantic cable laid. वो कौन था? स्कॉटलैंड वाला बंदा. Are we clear now? Yes. Okay, now answer these questions. Fill in the blanks. Complete the summary using words from the list below. Compensated, insulation, rallied, snapped, towed, transmitted, triumph, and voltage. Give me the word. Okay. In the 1850s, several unsuccessful attempts were made. बहुत सारे निष्फल सफर हुए थे. Were made to lay a telegraph cable across the Atlantic Ocean. For the first attempt, a cable was manufactured of copper and iron wire with gutta percha dash. Gutta percha क्या? What do you call it? जो वायर को प्रोटेक्ट करने के लिए जो लगाया उसके बाहर, जिससे वो पानी ना लगे, उसे क्या बोलते हैं? Easy one, come on, yes. Insulation.
insulation. It was so heavy, इतना बड़ा था that the ships that carried it had to be dashed by other ships. कैसे कवर किया उन्होंने? Yes, it had to be towed. खींचा गया, आगे से एक ने या पीछे से पकड़ा किसी ने, by other ships. This cable failed because it dashed and sank beneath the ocean. डूब गया और क्या हुआ? टूट गया. It snapped. The second attempt also failed. दूसरी बार भी failed. The third attempt appeared to be successful and a message was dashed. Message पहुंचा तो खरी. Message was transmitted, right? Queen ने message किया था from England to the United States. However, the telegraph company did not dash this time either. इस बार भी वो लोग सफल नहीं हुए. क्या आएगा सफल होने के लिए? Did not triumph. Did not triumph either. This attempt was also turned out to be a failure when the cable stopped working and the reputation of the project leaders were vilified. यानी वो लोग बदनाम हो गए कि इनके प्रोजेक्ट बहुत फालतू है, ये आइडिया नहीं है. So let's look at the word family first. First word is catastrophe, यानी दुर्घटना. The initial attempts to lay a transatlantic cable ended in catastrophe for field. Field के लिए क्या हुआ? It was a disaster, failure. Catastrophe यानी failure. Catastrophic. The failure of the initial attempts to lay the transatlantic cable resulted in a catastrophic loss of money. से बहुत ज़्यादा खर्चा हुआ. Catastrophically. Field failed catastrophically in his attempts to lay a transatlantic cable. वो fail हुआ बहुत भयानक तरीके से. He failed, but he failed catastrophically. कैसे fail हुआ? बहुत बड़े भयानक तरीके से. Compensation यानी भरपाई. There is no compensation for hard work and perseverance. यानी उसका कोई विकल्प नहीं है, मेहनत तो करना ही है. Compensate यानी भरपाई करना. Hard work can sometimes compensate for bad luck. Hard work क्या होता है? आपके पास भले लक बुरा है तो आपका हार्ड लक उसे कवर कर सकता है. क्या कर सकता है? उसे कॉम्पनसेट कर सकता है. जो कॉम्पनसेट करता है उसे एडजेक्टिव बोलते हैं कॉम्पनसेटिव. When the signals began to fade, जैसे जैसे सिग्नल फेड होना चालू किए, they took compensative measures to keep the cable working. तो उन्होंने उसी भरपाई करके उसे वापस चलाने की ट्राई. Next is insulation. Rubber makes good insulation for an electric wire. Electric wire को कवर करने के लिए कौन सी चीज अच्छी है? रबर. इसीलिए हमको बोला जाता है कि वायर को टच करने से पहले प्लास्टिक के स्लीपर्स, रबर के स्लीपर्स पहनने हैं. Insulator यानी rubber is a good insulator. Insulate is a verb. It was important to find a practical way to insulate the cable. Cable को सही तरह से insulate करना ढूंढना था. Insulated. The transatlantic cable was insulated by gutta percha. Next is perseverance, मेहनत. Because of Field's perseverance, a telegraph cable was eventually laid under the Atlantic Ocean. उसकी मेहनत की वजह से, यानी कैसी मेहनत? जहां पे निष्फलता आती है, फेलियर आता है, फिर भी वो आदमी मेहनत करता है, उसे बोलते हैं परसिवियरेंस. की वजह से दुनिया में पानी के अंदर ट्रांसअटलांटिक केबल लग गए. परसिवियर यानी मेहनत करना. An inventor must persevere to turn his ideas into reality. अपने आइडिया, अपने ख्यालों को हकीकत में बदलने के लिए एक इन्वेंटर, एक आविष्कारक को बहुत मेहनत करनी पड़ती है. एडजेक्टिव है perseverant. A perseverant person can find a way to achieve her dreams. जो मेहनतू आदमी है वो अपने रास्ते ढूंढ लेता है अपने सपनों को सच करने के. Next is triumph. Triumph यानी जीत. The laying of the cable in 1866 was a triumph for Kelvin. Kelvin की जीत. वर्ब भी है triumph यानी जीतना.
Many people worked hard to make the idea of a transatlantic cable into reality, and they finally triumphed. और फिर वो सफल हुए. Triumphant यानी विजेता वाला. It was a triumphant day. यानी वो विजेता वाला दिन था. When the English Queen sent a telegraph message to the American president. And triumphantly is they triumphantly announced the completion of the project. उन्होंने बताया कि ये project successful. Triumphantly. So here is the word family, and you have to match it with the right one. So select the right word here. Invention is all about hard work. आविष्कार मेहनत की बात है. An inventor may have a brilliant idea. उसका idea भले ही बहुत brilliant है, but he has to test it many times. बहुत बार उसे test करना पड़ेगा. The process may be filled with dash. Which one? Process may be filled with बहुत सारी दुर्भाग्य से भरी है, दुर्घटना से भरी होगी. Catastrophes. Right? The process may be filled with catastrophe. It is the dash inventor. कौन सा inventor? जो मेहनत करता है. क्या आपसे? This one. The perseverant. It is the perseverant inventor who will eventually be dash. वही होगा जो जीतेगा. Which one? He will be triumphant. Who will be eventually triumphant. For example, there were many attempts, failed attempts, before the transatlantic telegraph cable was successfully manufactured and laid. After a material was found that could suitably dash the cable, suitably, what is the word? Insulate the cable. Insulate. They thought the major difficulties had been solved. However, they met with many more difficulties when they actually tried to put the cable in place. They tried to dash for the flaws in their method, but were unsuccessful. They tried to compensate. They tried to compensate for the flaws in their method, but were unsuccessful. It wasn't until almost 10 years later, 10 साल के बाद, that another group of people succeeded in laying the cable. Right? So that is the story of this guy. Look at word skill, phrasal verb with set. Phrasal verb क्या होता है? Made up of two parts, a verb and one or two particles. The meaning of the phrasal verb is usually not related to the meanings of the individual part. Set out, यानी कोई सफल पे निकलना, चालू करना. Begin a project is called set out. Set back, इसका meaning है delay. And set up, यानी arrange. Meeting set up कर दिया. Now choose the correct phrasal verb. Then you have to tell me which one is which. Set out, set back, set up. The two inventors dashed to design a new kind of cable. दोनों आविष्कारों ने नया प्रोजेक्ट चालू किया. क्या आएगा? Set out. Set out. They set out to design a new kind of cable. They dashed a meeting to talk about their project. उन्होंने meeting को क्या किया? Set up. They set up a meeting. The meeting was dashed several days because of bad weather. बहुत दिनों के लिए delay हो गए. The meeting was Set back. set back. Set back means delay. Now listen to this recording and answer with no more than two words or a number. Right? तो यहाँ पे है हमारे पास dash. कौन से साल में the mayor got the idea for a museum? 1976 में the mayor dashed to get the requisite money. क्या किया उसने? 1977 में a large gift of money was lost. कौन से साल में construction of the museum began? कौन से साल में museum opened? 1998 में opening of exhibit on dash. So ready? Unit 10, Inventions, the Transatlantic Cable. Listen to a tour guide at a museum. Welcome to the City Museum of Invention. We'll begin our tour with a brief overview of the history of the museum. This museum first opened its doors in 1985, the result of years of effort by the mayor and others in our city. In 1975, the city's mayor first got the idea to start a museum about inventions. After he got several experts interested, he set out to rally the necessary funds. In 1976,
Several events were held to raise the requisite amount of money to begin construction of a building to house the museum. They had almost raised enough money when there was an unexpected setback. A family that had promised a large percentage of the needed funds inexplicably withdrew their offer. It was toward the end of 1977 that this large gift was lost. Although there was an inquiry, it was never made clear why the funds were withdrawn. Plans for the museum were put aside for 5 or 6 years, but a group of interested people renewed the efforts, and by 1982, they had rallied enough monetary support to go ahead with the plans. That year, construction on the building began. In just under 3 years, the museum was completed, the result of the perseverance of a number of dedicated people. The museum continues to be a popular part of our city's culture. Although everything in the museum follows the theme of inventions, the variety of the exhibits will appeal to visitors of disparate interests. Our most popular exhibit, which is all about cable TV, was first opened in 1998. So tell me, mayor को idea कब आया? 1975. Yes, correct. It was 1975. 1975. The mayor dashed to get the requisite money. Mayor ने क्या किया? Can you see the handwriting? The mayor set out. पैसा निकालना चालू किया. कंस्ट्रक्शन कौन से साल में चालू हुआ? 1982. 82. और म्यूजियम 3 साल बाद खुला. That was 1935. Right. ओपन एग्जिबिट ऑन किस टॉपिक पे है? केबल टीवी. राइट. पाछू સાંભળું છે મેયર સેટ આઉટ વાળું? Yes, sir. In our city. In 1975, the city's mayor first got the idea to start a museum about inventions. After he got several experts interested, he set out to rally the necessary funds. He set out to rally the necessary funds. Clear now? Yes, sir. Great. So now look at the question here. In your opinion, which is more important for success? Perseverance or good luck? ज़्यादा ज़रूरी क्या है? मेहनत या फिर luck? That's a topic, right? And here we have speaking questions. What profession do you work in, or do you plan to work in? What are the usual requisites for entering this profession? ये profession में enter करने के लिए regular requirement क्या है? In your opinion, what personal qualities are indispensable for success in your profession? कौन सी qualities बहुत ही जरूरी है? Which is indispensable? My answer is, in the field of teachers and training, reading, increasing knowledge is the most indispensable habit. Without that, you can't be a good teacher. That brings me to the end of this passage, in the end of this book. So this was the book that we completed. The whole book will be available to you shortly, so you guys can refer to the whole book. Essential words for the IELTS, right? Barron's practice, right? We have completed the whole series.